This will prevent the plantar flexion or the foot drop of a patient. Good afternoon and a very warm welcome to all our viewers to this edition of teleconferencing program which is based on student support services. आज फिर से हम हाजिर हो चुके हैं आपके टेलीविज़न चैनल पर एक और प्रोग्राम लेकर, आप लोग का पसंदीदा प्रोग्राम जो हम स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज पे बातचीत करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में जो दूरस्थ एजुकेशन सिस्टम का जो एक मेगा यूनिवर्सिटी है, हम अपने स्टूडेंट से हर तरह से कनेक्टेड रहते हैं, चाहे हम रेडियो चैनल के माध्यम से या टेलीविज़न चैनल के माध्यम से। तो आज इस प्रकार इसी सिलसिले में आज फिर से हम इस प्रोग्राम में हाजिर हो चुके हैं और आज हमारे साथ एक्सपर्ट हैं डॉक्टर एकता शर्मा फ्रॉम दिल्ली रीजनल सेंटर 3। स्वागत करती हूँ आपका। थैंक यू, नमस्कार। तो आप जान ही गए कि आज हमारे रिसोर्स पर्सन है डॉक्टर एकता शर्मा, और जिस तरह से आप हमारे साथ हमेशा रहते हैं, आज भी मैं उन सभी व्यूअर्स के लिए रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं टेलीफोन के माध्यम से। और ये टेलीफोन नंबर आपकी स्क्रीन के में नीचे स्क्रॉल हो रहे हैं, उन नंबर्स के माध्यम से आप हमसे सीधे सीधे जुड़ सकते हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं रिलेटेड टू एनी सर्विसेज रिक्वायर्ड। लाइक हम लोग आज जैसे बात करना चाह रहे हैं कि ऑनगोइंग टर्म एंड एग्जाम पे, और इस वक्त यूनिवर्सिटी में टर्म एंड एग्जाम यानी दिसंबर सत्रांत परीक्षा चल रही है और एडमिशन का सेशन तो हमारा कब का खत्म हो चुका है। री रजिस्ट्रेशन यानी पुनः नामांकन की भी प्रक्रिया चल रही है साथ साथ में। बट इससे पहले कि हम री रजिस्ट्रेशन की सारी पहलुओं पर नज़र डालें, हम एग्जाम से रिलेटेड बात करेंगे। तो मैं बताना चाहूँगी कि इग्नू में इवैल्यूएशन की जो है 3 प्रोसेस है। सबसे पहले तो हमारे एक बहुत ही सिंपल तरीका है जो अपनी स्टडी मटेरियल यानी सेल्फ लर्निंग मटेरियल में ही आपको हर एक ब्लॉक के बाद एक चेक योर प्रोग्रेस करके छोटे छोटे प्रश्नावली दिए रहते हैं। उन प्रश्नों का जवाब देकर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग या अपने खुद की प्रोग्रेस की जांच कर सकती हैं। और दूसरी तरीका है असाइनमेंट और प्रोजेक्ट या फील्ड वर्क जर्नल्स। तो ये हमारे जो कुछ प्रोग्राम्स है जिसमें हर प्रोग्राम में असाइनमेंट्स की सबमिशन की प्रक्रिया है, और उसके अलावा कुछ प्रोग्राम्स है हमारे जिसमें प्रोजेक्ट को भी सबमिशन करना पड़ता है, और प्लस कुछ प्रोग्राम जैसे MSW है उनमें हमारा फील्ड वर्क जर्नल को भी सबमिट करना पड़ता है। तो इन दो ये सब के अलावा एक और हमारी प्रक्रिया है जिसको हम अंतिम भी कह सकते हैं, टर्म एंड, जिससे कि आप नाम से भी जाने जा सकते हैं कि टर्म एंड एग्जाम, जिसको हम साल में 2 बार कंडक्ट करते हैं, जून में और दिसंबर में। तो इस वक्त जब हम आप लोगों के सामने प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, तो इग्नू में अभी सत्रांत परीक्षा दिसंबर का अभी जो दौर चल रहा है, तो इसी से रिलेटेड हम आपसे क्वेश्चन मतलब आपका सवाल का जवाब देने के लिए हम रिसोर्स पर्सन लेकर आए हैं। तो डॉक्टर एकता, तो मैं अपनी स्टूडेंट की तरफ से भी जानना चाहती हूँ कि जो एग्ज़ाम देते समय हमारे स्टूडेंट को एग्ज़ाम सेंटर हॉल में प्रवेश करने से पहले किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए?
ये बहुत अहम बात आपने पूछी मैडम। देखिए, इस टाइम जो है स्टूडेंट सभी हमारे दिसंबर 2023 टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए अपीयर हो रहे हैं एज पर देयर एलिजिबिलिटी, और एग्ज़ाम सेंटर्स उन्होंने ऑप्ट किए हुए हैं। उनको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी यूनिवर्सिटी की तरफ से होती है कि वो अपनी लोकेशन, जो करंट लोकेशन उनकी इस दौरान रहती है, उसके हिसाब से वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से एग्ज़ाम सेंटर जो है, वाइल फिलिंग अप देयर एग्जामिनेशन फॉर्म, वो सेंटर ऑप्ट कर सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस तो करना ज़रूरी होता ही है हर लर्नर के लिए, लेकिन एग्ज़ाम सेंटर पहुंचने से पहले कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं जिनका उनको खास ध्यान रख लेना चाहिए, ताकि उनको एग्ज़ाम देते समय किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े और उनका स्मूथली एग्ज़ाम जो है वो उसमें वो अपीयर हो सके। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ कंपल्सरी टू कैरी देयर वैलिड इग्नू आईडी कार्ड। Yes. क्योंकि वो एक अपना दूसरा उनके पास आईडी प्रूफ होता है, दैट इज़ ओके, बट फॉर टू प्रूव देयर आइडेंटिटी एज ए इग्नू स्टूडेंट, इट इज़ मस्ट टू कैरी देयर वैलिड इग्नू आईडी कार्ड इन हार्ड कॉपी, बिकॉज इट इज़ ऑलवेज सीन दैट स्टूडेंट की एक टेंडेंसी होती है कि एक सॉफ्ट कॉपी वो अपने मोबाइल फ़ोन में कैरी करते हैं, बट एज पर द रूल्स ऑफ द यूनिवर्सिटी, मोबाइल phones and any other electronic device is not at all permissible to carry in the examination hall. तो ये ज़रूरी है कि वो ये जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है आईडी कार्ड, वो हार्ड कॉपी उसकी जो है लैमिनेटेड फॉर्म में लेके जाएं, क्योंकि ये इग्नू का आईडी कार्ड उनको अपने पास रिटेन करके संभाल के रखना होता है टिल दे आर एसोसिएटेड विद द यूनिवर्सिटी फॉर देयर स्टूडेंटशिप। उसके अलावा, जैसे कि मैंने अभी कहा, कि किसी तरह का कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो ऑब्जेक्शनेबल है, जो परमिसिबल नहीं है यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो साथ में कैरी ना करें, और अपने साथ जो एसेंशियल स्टेशनरी होती है फॉर राइटिंग द एग्जामिनेशन एंड देयर हॉल टिकट, आईडी कार्ड, ये ही चीज़ें होती हैं जो वो साथ में लेकर जाएं, ताकि कोई भी ऐसा पेपर जिसके एग्ज़ाम देते समय उनको की आवश्यकता नहीं है, वो अपने साथ ना लेकर जाएं, ताकि उनका जो कीमती समय है परीक्षा में अपने उत्तर लिखने का, वो समय उनके साथ मतलब उनका बर्बाद नहीं होना चाहिए। और ये बड़ा ही हर स्टूडेंट के लिए, अगर हम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो हर स्टूडेंट जब अपना एग्जाम लिख रहा होता है तो सारी स्ट्रेस में होता है, प्लस उनकी कंसंट्रेशन क्वेश्चन पे ज्यादा होती है, तो उस वक्त उनको किसी पेपर एंड टाइम मैनेजमेंट एज वेल। बिल्कुल मैम, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट, तो वो अपना किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन उनके पास नहीं होना चाहिए और पीसफुली वो अपना पेपर लिखें। तो ज़रूरी है कि छोटी छोटी चीज़ें वो अपनी नोटिस में रखें, जो कि यूनिवर्सिटी इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से उनको अपनी कैरी करनी है। Yes, since you mentioned about hall ticket, so when learners fill their exam form, so they would like to know where will they get their hall ticket, how to download and all. So would you like to throw light on this issue? Sure. हॉल टिकट जो है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अवेलेबल होता है सभी स्टूडेंट्स के लिए, और मैं उनको लिंक भी शेयर कर लेती हूँ थ्रू वेबसाइट। प्लीज़ शेयर द स्क्रीन। ये इग्नू की हमारी वेबसाइट है, जिसका एड्रेस है www.ignou.ac.in, और इसी के होम पेज पर डेट शीट भी अवेलेबल है फॉर बोथ ODL एंड ऑनलाइन प्रोग्राम्स के लिए, और हॉल टिकट भी वो डाउनलोड यहीं से कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल प्रोमिनेंटली फ्लैश हो रहा है हमारी वेबसाइट के होम पेज पे। तो यहाँ से वो जब इस लिंक पे जाएंगे तो उनका जो अपना एनरोलमेंट नंबर है और जो प्रोग्राम कोड है, उसको अगर वो यहाँ पे फीड इन करेंगे तो उनका जो हॉल टिकट है वो एक्सेसिबल हो जाएगा, जिसका वो यहीं से प्रिंट आउट लेके और एग्जामिनेशन हॉल में वो जा सकते हैं। और ये डिटेल्स उनकी अकॉर्डिंगली हॉल टिकट में इनकॉर्पोरेट होती हैं। जो वो एग्जामिनेशन फॉर्म अपना भरते हैं, सबमिट कराते हैं, तो जो सेंटर वो ऑप्ट करते हैं प्लस और जो कोर्सेज उन्होंने ऑप्ट किए होते हैं वो उसमें रिफ्लेक्ट हो जाते हैं हॉल टिकट में।
जैसे कि मैंने कहा कि एग्ज़ाम सेंटर वो ऑप्ट करते हैं। यूनिवर्सिटी की कोशिश रहती है कि जो एग्जामिनेशन सेंटर हमारा लर्नर ऑप्ट करे तो उसको वही अलॉट हो, बट लुकिंग इनटू दी अदर एस्पेक्ट्स, जैसे कि हर एग्जामिनेशन सेंटर की अपनी एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है बेस्ड ऑन देयर एकेडमिक रिसोर्सेज, तो उसके हिसाब से ही उनकी सीटिंग कैपेसिटी डिटरमिन होती है और अकॉर्डिंगली स्टूडेंट्स को वहाँ पे अलॉट किया जाता है। तो इन केस वेरी मतलब रिमोटली इट इज़ हैपनिंग कि स्टूडेंट की जो ऑप्शन होती है उसके अलावा उसको दूसरा सेंटर अलॉट हो जाता है। तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू द लर्नर कि जो हॉल टिकट में उनका एग्जाम सेंटर आ रहा है उसी पे वो दैट इज़ फाइनल और उसी पे वो जाके अपना एग्जाम दे। Yeah, in this context, I would like to know that in few cases, at the last minute, student would like to, due to maybe there's some emergency or exigency, they would like to change the exam center, and they put the request that so for so and so reason we would like to change our exam center from this to this. At this point, what is correct, appropriate solution for this, and just please throw on light on this. देखिए, as far as the examination center change is concerned, initially it is not advisable to go for its change. थोड़ा सा लर्नर को सोच समझ के अपने ऑप्शंस को एक्सरसाइज करना चाहिए जब वो अपना एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट करते हैं। बट इन एनी केस अगर कोई ऐसी सिचुएशन किसी लर्नर के साथ आती है, इट इज़ ऑलवेज सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स एट द कंसर्न एग्जामिनेशन सेंटर, क्योंकि सारी प्रिपरेशंस एडवांस में हो जाती हैं बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द टर्म एंड एग्जामिनेशंस, और सभी एग्जाम सेंटर्स पे तैयारियां हो जाती हैं। और उसके बाद अगर कहीं कोई पॉसिबिलिटी होती है तभी एग्जाम सेंटर चेंज होता है। एंड as per directions, दिल्ली एनसीआर में स्टूडेंट्स के जो एग्ज़ाम सेंटर चेंज की ऑप्शन होती है वो उसको हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ट्रैवलिंग विद इन दिल्ली एनसीआर इज़ वेरी कन्वीनियंट. One can reach conveniently. We have all type of transportation is available. We have good metro connectivity to the exam centers, so student can manage. बट बहुत जेन्युइन केस अगर किसी की बहुत ज़्यादा एक्सीजेंसी है तभी स्टूडेंट को इस ऑप्शन पे जाना चाहिए, अदरवाइज वो थोड़ा सोच समझ के ऑप्शंस को एक्सरसाइज करें और जो पहले उन्होंने एग्जाम सेंटर हॉल टिकट में उनके आ रहा है वहीं जाके उनको एग्जाम देना चाहिए। जी जी, बहुत बहुत थैंक यू। और जैसे हमने हॉल टिकट की बात की, चेंज ऑफ एग्जाम सेंटर की बात की, और जैसे डेट शीट, जो स्टूडेंट डेट शीट कहाँ से वो लोग अवेल कर पाते हैं, क्या वो भी ऑनलाइन अवेलेबल है? बिल्कुल, ये हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है डेट शीट। मैं शेयर कर लेती हूँ। ये जैसे कि जिस पेज पे इग्नू की वेबसाइट पे हॉल टिकट का लिंक है वहीं उनके लेफ्ट साइड में डेट शीट भी अपलोडेड है, तो इस लिंक पर जाके स्टूडेंट अपनी डेट शीट को एक्सेस कर सकता है। इसी में ही नीचे लिंक्स अवेलेबल हैं। फाइनल डेट शीट फॉर टर्म एंड एग्जामिनेशन ओडीएल मोड, देन फाइनल डेट शीट फॉर इसी पे वो अगर जाएंगे तो अपनी वो डेट शीट सभी प्रोग्राम्स की यहाँ पे एक्सेसिबल है। तो और इसका पर्पस, क्योंकि डेट शीट जो है यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म ही अपलोड कर देती है वेबसाइट पे, ताकि स्टूडेंट जब अपना एग्ज़ाम फॉर्म भर रहे होते हैं तो उनके पॉसिबल है कि उनके कुछ ऐसे कोर्सेज भी हों जो पुराने सेशंस के हों, बैकलॉग कोर्सेज हों, तो अगर उनको डेट शीट पहले से मिल जाती है तो वो अकॉर्डिंगली अपने कोर्सेज की वो ऑप्शन ले सकते हैं, ताकि उनको किसी भी तरह का कोई फर्दर एग्जाम शेड्यूल में दिक्कत ना आए, कोई क्लैश का सामना नहीं करना पड़े। एंड मेनी अ टाइम आवर स्टूडेंट दे हैव अ कंप्लेन दैट सो एंड सो पेपर इज clashing, and we cannot give exam at the same time, so that happens sometime. So in this case university ने क्या डिसीजन, किस तरह के मतलब डेट शीट को क्लैश मानते हैं और किस तरह के केसेस को क्लैश नहीं मानते?
देखिए कुछ कोर्सेज हैं जो ग्रुप वाइज भी उनको किया हुआ है, इलेक्टिव कोर्सेज को फॉर बैचलर्स डिग्री लेवल। तो उनके जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो ग्रुप के हिसाब से ही डेट शीट में इंडिकेट किए जाते हैं। लेकिन जो जनरल क्लैश जो कई बार स्टूडेंट को सामना करना पड़ता है वो होता है कि जैसे कि अभी हमने कहा कि बैकलॉग कोर्स अगर है और उनका जो करंट सेशन का है जिसका एक्चुअली उनका मिनिमम पीरियड अभी पूरा हुआ है और वो अभी टर्म इन के लिए एलिजिबल हुए हैं, उस करंट सेशन का उनका कोर्स है, तो अगर बैकलॉग भी सेम डेट और टाइमिंग में आ रहा है दैट इज कंसिडर्ड एज ए क्लैश। तो ऐसे केसेस में अगर अनोइंगली स्टूडेंट ने ऑप्ट कर लिया है और वो डेट शीट में क्लैश हो गया है लेकिन वो उनके हॉल टिकट में भी ऐसे ही आ रहा है, तो स्टूडेंट को ही डिसाइड करना होगा कि उनको कौन से कोर्स के एग्जाम के लिए अपियर होना है। यानी प्रायोरिटी स्टूडेंट हैव टू थिंक, वो एक मतलब मेक देयर फाइनल डिसीजन। जी जी। तो अगर हम ऐसे केसेस अगर स्टूडेंट इन थोड़ी छोटी छोटी चीजों पे ध्यान रखेंगे तो उनके लास्ट मिनट का स्ट्रेस खुद ब खुद ही मैनेज हो जाएगा और वो टेंशन में भी नहीं रहेंगे और स्मूथली एग्जाम दे पाएंगे। राइट, आप यही कहना चाह रहे हैं, राइट? तो अब इसी सिलसिले में स्टूडेंट जो कई बार जो होते हैं अपने आप को एलिजिबिलिटी, जैसे मैं आपको ये बताना चाहूँ, कई बार हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं कि उन्होंने जुलाई 2023 में बीए का एडमिशन लेते हैं और वो सोचते हैं कि अब वो दिसंबर के लिए क्या एलिजिबल हो गए एग्जाम देने के लिए। तो इस तरह की काफी कंफ्यूजन भी हमारे स्टूडेंट्स के पास रहते हैं। तो कुड यू प्लीज थ्रो लाइट ऑन द एलिजिबिलिटी ऑफ in appearing in exams? बिल्कुल। Before submission of the examination form, student must check their eligibility. Eligibility के parameters हैं, जैसे कि first of all कोर्स रजिस्ट्रेशन का मिनिमम पीरियड जो है वो फुलफिल हो जाना चाहिए, वो रिक्वायरमेंट उनकी फुलफिल होनी चाहिए। दैट मीन्स अगर एनुअल बेस्ड प्रोग्राम है तो मिनिमम 1 year शुड हैव elapsed टू बिकम एलिजिबल फॉर दैट पर्टिकुलर कोर्स। अगर जैसे दिसंबर टर्म की हम बात करें तो एनुअल बेस्ड प्रोग्राम में जिस कोर्स के लिए स्टूडेंट ने अपीयर होना है उसका रजिस्ट्रेशन उनका जनवरी 23 सेशन में हुआ होना चाहिए। लाइकवाइज अगर किसी स्टूडेंट का कोर्स रजिस्ट्रेशन जुलाई 2023 सेशन में हुआ है तो देन स्टूडेंट इज एलिजिबल फॉर अपीयरिंग इट्स एग्जामिनेशन इन जून 2024। तो वो मिनिमम पीरियड का कंप्लीशन ज़रूरी है। लाइकवाइज अगर सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है या सर्टिफिकेट प्रोग्राम है तो 6 months का मिनिमम पीरियड उनका कंप्लीट हो जाना चाहिए। सेकेंडली स्टूडेंट ने जिस कोर्स के लिए एग्जामिनेशन में अपीयर होना है तो उसके असाइनमेंट्स उन्होंने ज़रूर सबमिट करा दिए हों, क्योंकि असाइनमेंट सबमिशन इज़ अ प्री कंडीशन फॉर अपीयरिंग इन दी टर्म एंड एग्जामिनेशन ऑफ अ पर्टिकुलर कोर्स। थर्डली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्टूडेंट का जो वैलिडिटी है रजिस्ट्रेशन का, जी वो जरूर, ये काफी केसेस आजकल हम लोग को देखने को मिल रहा है। जी। तो ये स्टूडेंट अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के थ्रू चेक कर सकते हैं। देयर वैलिडिटी ऑफ द प्रोग्राम रजिस्ट्रेशन शुड बी देयर। अगर प्रोग्राम वैलिडिटी नहीं है तो उनका रिजल्ट नहीं डिक्लेयर हो पाएगा, तो वो फिर एक कंस्ट्रेंट उनके सामने आएगा। तो थोड़ा सा अपना टाइम मैनेज करके प्लानिंग से जब भी प्रोग्राम में एडमिशन लें हर स्टूडेंट, तो थोड़ा सा अपनी ये प्लानिंग वो शुरू में ही कर लें, क्योंकि इट इज़ ऑब्वियस कि स्टूडेंट अपनी और इंगेजमेंट्स में भी बिजी होते हैं प्रोफेशनली और पर्सनली एंड सोशली। तो थोड़ा सा प्लान वे में अगर वो अपने प्रोग्राम को परस्यू करेंगे और एग्जामिनेशन को थोड़ा सा सेशन वाइज वो अगर सारी कंडीशंस उनके सामने होंगी, उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन होगी, तो ऐसी क्रिटिकल सिचुएशंस में वो कभी नहीं आएंगे। जी, ये प्लानिंग के साथ साथ अपनी जी वेलकम। सो लेट्स वेलकम टू आवर कॉलर फ्रॉम मुजफ्फरनगर। हेलो गुड आफ्टरनून टू ऑल अथॉरिटीज। यस, गुड आफ्टरनून। या Ma'am, my name is Karan Verma and I am enrolled in the Bachelor of Arts program of IGNOU. Okay. I would like to know that within how many days will I receive my provisional mark sheet after completing and successfully passing in all my subjects? ऐसे केसेस में if you have completed all your theory exam plus if you receive if your all marks are updated on your mark sheet, so it will you will receive your mark sheet within a month, or if
if your address is correct, right? If you have not changed your address and if your present address is the same, within a month or after a month, in a month, not it will not take a long time. But if there is any delay, so that is also from your side. आपने अगर एड्रेस में कोई चेंजेस आया हो तो फिर आप लोगों को समय रहते अपडेट देना पड़ेगा और आपको नियरेस्ट अपनी पोस्ट ऑफिस में जाके चेक करना पड़ेगा. पर आपको ये सब चीज श्योर होने के लिए आपको ऑनलाइन ग्रेड कार्ड की भी को भी चेक करना चाहिए कि आपका सब कुछ क्लियर हुआ है कि नहीं. Thanks for your valuable input. One more thing I would like to know, that in case I don't receive my mark sheet after clearing and meeting all the eligibility requirements, what Yes. remedial measures are available to me? Yes. So in that case, you can write to registrar SED, okay, registrar SED@ignou.ac.in. At the same time, you can also send same mail to us, copy to RSD, that is for Regional Services Division, @ignou.ac.in, and we will also try to look into your matter. Okay? Thank you so much, ma'am. Have Okay, a great day. Okay, welcome, and wish you all the best. So, I hope हम अपनी चर्चा को कंटिन्यू कर सकते हैं. तो हम बात कर रहे थे कि जो असाइनमेंट की बात भी कर रहे थे. जी. असाइनमेंट का जैसे कि एक वन ऑफ द important parameter है for appearing in the examination. Assignment is also part of continuous evaluation, या जिसको हम formative evaluation का पार्ट हम कह सकते हैं. और बेसिक पर्पस असाइनमेंट कंपोनेंट को हर प्रोग्राम में रखने का एक यही होता है क्योंकि स्टूडेंट हमारे साथ एक डिस्टेंस पर होता है, डिस्टेंट लर्नर है, तो उसकी जो लर्निंग है उसमें फर्दर इम्प्रूवमेंट के लिए स्टूडेंट को एक स्कोप होना चाहिए बिफोर अपियरिंग इन द टर्म एंड एग्जामिनेशन. क्योंकि टर्म एंड एग्जामिनेशन अपने आप में एक फाइनल एग्जामिनेशन होता है इस पर्टिकुलर कोर्स का, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि स्टूडेंट की जो लर्निंग है वो किस लेवल पे जा रही है. तो अगर उसमें उसको फर्दर इम्प्रूवमेंट भी चाहिए, उसको एक फीडबैक भी चाहिए कि उसने अपना जो सेल्फ लर्निंग मटेरियल है उसमें से उसने कितना सीखा है, कितना लर्न किया है. तो जब वो असाइनमेंट के क्वेश्चंस के रिस्पॉन्सेज लिखता है और उसका इवैल्यूएशन होता है तो स्टूडेंट को एक फीडबैक आ जाता है कि मेरी प्रिपरेशंस कैसी हैं और कहाँ मुझे किस कंसेप्ट में, किस सब्जेक्ट एरिया में मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. तो ऐसे केसेस के लिए असाइनमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. असाइनमेंट्स आर ऑल्सो टेकन एज अ टूल ऑफ इवैल्यूएशन. तो हर स्टूडेंट को बहुत ऑनेस्टी से पहले अपना लर्निंग मटेरियल को अच्छे से समझ के ही अपने असाइनमेंट्स को लिखना चाहिए, ताकि जब वो अपने आंसर्स को लिखते हैं असाइनमेंट क्वेश्चंस के तो उनको पता रहता है कि कितना कुछ वो सीख रहे हैं और कहाँ उनको दिक्कतें आ रही हैं. तो अगर कोई डिफ़िकल्टी रह भी जाती है तो दे कैन कंसल्ट देयर एकेडमिक काउंसलर हु आर अवेलेबल एट देयर अटैच्ड लर्नर सपोर्ट सेंटर्स. Yes, thank you so much. And in the same way, if a learner would like to prepare for the exam, what all things they have to keep in their mind? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपरेशन के लिए देखिए बहुत ज़रूरी है कि आफ्टर एडमिशन्स हमारे बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जहाँ पे लर्नर की नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को फोकस करते हुए ही उनकी सपोर्ट सर्विसेज दी जाती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी जो लर्नर सपोर्ट सेंटर उनको मिलता है वहाँ पे उनके एकेडमिक काउंसलिंग सेशंस होते हैं. तो शेड्यूल्स के हिसाब से हर लर्नर को ये एडवाइजेबल है कि वो अपने स्टडी सेंटर पे जब भी काउंसलिंग सेशंस हों अपने ज़रूर अटेंड करने चाहिए. उससे क्या होता है, एक तो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, क्योंकि एक स्टूडेंट एक डिस्टेंस मोड में जब पढ़ाई करता है तो थोड़ी सी आइसोलेशन की फीलिंग आती है. वहाँ जब वो काउंसलिंग सेशन में जाते हैं तो अपनी जो एकेडमिक काउंसलर्स हैं उनके साथ इंटरेक्शन होता है, अपने पीयर ग्रुप के साथ उनका इंटरेक्शन होता है, तो एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आती है, तो उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है. और जो पढ़ाई करने में उनको परेशानी आ रही होती है वो काफ़ी हद तक उनकी कम होने लगती है. और जब मटेरियल जो उनको यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया जाता है पढ़ाई करने के लिए, तो सेल्फ लर्निंग मटेरियल में जब वो उसको रीड करते हैं तो वाइल रीडिंग दे मस्ट be encountering some difficult
questions which they would like to go for their solution, तो academic counselor से वो they can request for their solutions discuss कर सकते हैं. कई बार interaction के through it might be possible कि उनका जो batchmate है also facing the same difficulty, तो ये discussions जो होते हैं बहुत constructive होते हैं learning point of view से. साथ ही साथ जब assignments उनको solve करने होते हैं तो assignment लिखते लिखते भी उनको काफ़ी जो है अपने जो सिलेबस है, जो उनके लेसन्स हैं, जो लर्निंग मटेरियल में उनके यूनिट्स दी गई हैं, तो उसकी भी उनकी जो है अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगती है. तो ये सब कुछ जो एकेडमिक कंपोनेंट्स हर प्रोग्राम में इंक्लूडेड होते हैं, ये एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में उनको बहुत सपोर्ट करते हैं. तो ये one more thing is coming in my mind, that is Dr. Ekta, कि for preparing for exam, final exam, one more thing is also helpful, that is previous year question papers. So I think that is also available in IGNOU website, right? Yes, these are also available, and I would also like to share. Papers are available in the student zone. Yeah. I'll just share the link. From homepage of IGNOU website, we can go to the student zone, and on the page of student zone, there is a link available for question papers. Towards the downside of the page, question paper link is there, and question papers are available session wise. Beginning from June 2010. We have all the question papers uploaded for the last term and examination held in June 2023 session. So subject wise, students can access these papers, and from these papers they got an idea about how the question can come in the examination. Okay, let's welcome. Hello. Please आप क्वेश्चन पूछिए. मैम, मैंने ना अपना असाइनमेंट सबमिट किए थे जून वाले सेशन में, तो मुझे मेरा सारे मार्क्स अपलोड हो गए, बट एक MGP 13 का रिसीव नहीं हुआ, और मैं इसके रिगार्डिंग मेल भी कर चुकी हूँ, और मैं यूनिवर्सिटी भी गई थी, तो मुझे कहा था कि वेट कर लीजिए नवंबर लास्ट तक. तो डॉक्टर आपने अपने स्टडी सेंटर पे असाइनमेंट सबमिट कराए थे, तो डू यू हैव अ रिसीट ऑफ दैट? मैम, मैंने ऑनलाइन सबमिट किए थे. कोई बात नहीं, आप एक बार अपने रीजनल सेंटर पे जाके इस चीज़ के बारे में पता कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका सबमिशन है तो यू विल डेफिनेटली गेट द रिजल्ट. ओके, तो मुझे और कुछ नहीं करना पड़ेगा? नहीं, आप अपने रीजनल सेंटर को मेल कर दीजिए, और इफ़ यू कैन गो पर्सनली यू कैन विजिट योर रीजनल सेंटर ऑल्सो. मैम, मेल तो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, बट मेरे को रिस्पांस नहीं आया उधर से. मैं 2-3 बार मेल कर चुकी हूँ. कोई बात नहीं, आपको रिस्पांस आ जाएगा, ठीक है. और आप अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हो अपने रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के थ्रू. मैं डेली करती रहती हूँ, हर दूसरे तीसरे दिन. हाँ, तो कोई बात नहीं, आपका अगर है तो ये जरूर आपका रिफ्लेक्ट हो जाएगा ग्रेड कार्ड में. थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, योर रीजनल सेंटर विल टेक केयर ऑफ दिस. मैम, फिर भी कितना मैक्सिमम टाइम लग जाता है? देखिए, अगर आपका गया है तो उसके बाद इवैल्यूएशन में थोड़ा समय लग जाता है, और जैसे इवैल्यूएट हो जाएगा तो जो अवार्ड्स होते हैं वो आपके ग्रेड कार्ड में रिफ्लेक्ट. बाकी सबका स्टेटस चेक कर पा रही हूँ, रिजल्ट भी मेरा सबका अपडेट हो गया, बट इसी का MGP 13 का रिसीव नहीं हुआ मुझे. कोई बात नहीं, ये भी आपका आ जाएगा, ठीक है. आपके पास अगर रिसीट है तो उसकी एक स्कैन कॉपी भी आप अपने RC को मेल कर देना. आज के टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का रेफरेंस देते हुए आज एक और फ्रेश ईमेल या रिमाइंडर RC दिल्ली 3 को भी डाल दीजिए. मैडम RC दिल्ली 3 से ही हैं, तो वो जरूर इस मैटर को देख लेंगी, ठीक है. अच्छा, RC दिल्ली वाली मेल पे? RC दिल्ली 3 आप कहाँ डालते थे आज तक ईमेल? RC दिल्ली पे ही डाली है. RC दिल्ली 3. RC दिल्ली 3. यस, क्योंकि जो आप उत्तम नगर जो है RC दिल्ली 3. हाँ, RC दिल्ली 3 है, उसकी मेल ID आप नोट कर सकते हो, rcdelhi3@ignou.ac.in. दोबारा बोल दीजिए. RC दिल्ली आपकी स्क्रीन में भी आया होगा, rcdelhi3@ignou.ac.in. ठीक है मैम. तो आप आज का टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का रेफरेंस देते हुए और अपना सारा डिटेल भेज दीजिएगा, ठीक है.
आई थिंक डिसकनेक्टेड हो गए और उनकी बातों का भी हमने काफी हद तक जवाब दे दिया है। और हम बात कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाउनलोड का। हाँ, तो क्वेश्चन पेपर्स जैसे कि अभी हमने स्टूडेंट्स के साथ लिंक शेयर किया है, वेबसाइट पे वो एक्सेस कर सकते हैं और ये इनसे उनको अपनी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प हो सकती है, बिकॉज दे गेट एन आइडिया हाउ कैन दी क्वेश्चंस मे बी देयर इन देयर क्वेश्चन पेपर्स ड्यूरिंग द एग्जाम। जी, तो ये सारी तीन जो स्टेप्स आपने बताए फॉर प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम, वन इज राइटिंग असाइनमेंट ऑनेस्टली, and the second one is attending all the counseling session, and the third one is with the help of previous year question paper, so they can check the question pattern and then they will have an idea that how to go about it and how to prepare for अपना term and exam, right? जी, तो ये सब करने के बाद अब कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसमें हमारे प्रैक्टिकल्स कंपोनेंट हैं। तो जैसे थ्योरी एग्जाम जो टर्म एंड एग्जाम में देने के बाद स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए कैसे प्रिपेयर होना पड़ेगा और उनको प्रैक्टिकल्स एग्जाम तो कब होंगे इसका कैसे पता चलेगा? जी, कि प्रैक्टिकल हर प्रोग्राम में कुछ जैसे थ्योरी कोर्सेज भी होते हैं, प्रैक्टिकल कोर्सेज भी होते हैं। तो प्रैक्टिकल कोर्सेज की जो रिक्वायरमेंट होती है, लाइक वी हैव काउंसलिंग सेशंस इन थ्योरी कोर्सेज, लाइकवाइज वी हैव प्रैक्टिकल कोर्सेज विद प्रैक्टिकल काउंसलिंग सेशंस। और प्रैक्टिकल काउंसलिंग सेशंस में जो अटेंडेंस होती है वो कंपलसरी होती है। ऑल्दो ये चीज उनको स्टूडेंट को ध्यान देना है। फिर से आप एक बार बोल दीजिए। जी, जो प्रैक्टिकल कोर्सेज के जो काउंसलिंग सेशंस होते हैं उसमें अटेंडेंस कंपलसरी होती है। तो स्टूडेंट को जब कभी भी प्रैक्टिकल काउंसलिंग सेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन आए तो उनको किसी भी तरह से कोशिश ये करनी चाहिए कि उन सेशंस को वो ज़रूर अटेंड कर लें, क्योंकि अगर काउंसलिंग सेशंस उनके नहीं कंप्लीट हो पाएंगे तो दे विल नॉट बी एबल टू गो फॉर देयर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। तो ये एक प्री कंडीशन है जिसका उनको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, इसको पूरा कर लेना चाहिए। और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस होती हैं अभी, जैसे कि अभी थ्योरी टर्म एंड एग्जामिनेशंस हो रहे हैं, इनके कंप्लीशन के बाद जो है जनवरी ऑनवर्ड्स फॉर दिसंबर 2023 टर्म एंड सेशन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस जो हैं मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स के वो शुरू हो जाएंगे, और जिसकी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम जो है वेबसाइट पे अपलोड होती रहेगी ऑन इग्नूज मेन वेबसाइट एंड ऑल्सो ऑन द रिस्पेक्टिव रीजनल सेंटर्स वेबसाइट। तो ये बात जरूर ध्यान देना चाहिए स्टूडेंट्स को कि कई बार स्टूडेंट हमारे पास आते हैं अपना ग्रीवेंस लेके कि हमें प्रैक्टिकल एग्जाम का पता ही नहीं चला। तो ऐसे में स्टूडेंट को अपने रेस्पेक्टिव रीजनल सेंटर यानी अपना उनका कंसर्न रीजनल सेंटर की वेबसाइट में जो इसके जो पता चलेगा इंफॉर्मेशन फॉर रिगार्डिंग प्रैक्टिकल एग्जाम्स, राइट? जी। और अब क्योंकि यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नई नोटिफिकेशन आया था फॉर द स्टूडेंट्स रजिस्टरिंग इन द जनवरी 2023 सेशन एडमिशन साइकिल से जिनका रजिस्ट्रेशन है उनके लिए प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल फी भी अब उनको पे करनी होगी सेपरेटली। हाँ जी, अपार्ट फ्रॉम ये टर्म एंड एग्जाम की थ्योरी एग्जाम की फी के अलावा। हाँ जी, प्रैक्टिकल एंड प्रोजेक्ट फी भी अब जो है उसकी भी उनको सबमिशन करना होगा फी का, और वो डिटेल्स जो हैं वो वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। जहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म का सबमिशन का लिंक था वहाँ पे भी ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। स्टूडेंट कैन चेक फ्रॉम देयर फॉर द कोर्सेज हैविंग क्रेडिट्स अप टू 4, दैट इज 4 क्रेडिट तक के कोर्सेज हैं, उनकी फीस जो है 300 है, और कोर्सेज विच आर हैविंग क्रेडिट्स अबव 4 उनकी जो है 500 है फॉर बोथ प्रैक्टिकल एंड प्रोजेक्ट। सो दीज फीस आर टू बी पेड सेपरेटली फॉर द कंपोनेंट्स। तो एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर द स्टूडेंट्स रजिस्टरिंग इन जनवरी 2023 साइकिल। यानी 22 सेशन के स्टूडेंट्स को जो जैसे पहले एग्जिस्टिंग रूल को ही फॉलो करना पड़ेगा, यानी जो जनवरी 23 में जिन स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है तब से ये वाला रूल एप्लीकेबल होगा, राइट? जी। तो इन बातों का भी ध्यान हमारे स्टूडेंट्स को रखना चाहिए कि लास्ट मिनट में आके कई बार ये उनका कहना होता है कि हमने तो
थ्योरी यानी टर्म एंड एग्ज़ाम के टाइम में अपना फ़ी पे कर दिया था, तो फिर हमारा प्रैक्टिकल क्यों कंडक्ट नहीं कराया जा रहा है, ऐसी भी उनकी क्वेरी रहती है। आई होप ऐसे स्टूडेंट के लिए तो आज का ये हमारा सेशन जो लाइव टेलीकॉन्फ्रेंसिंग प्रोग्राम जो है बहुत ही हेल्पफुल साबित हुआ होगा। और इसके अलावा हम जी प्लीज लेट्स वेलकम टू कॉलर फ्रॉम रायपुर। हेलो। हेलो मैम, आई एम जिया आचार्य। जी मैम, मुझे एक्चुअली एक डाउट था। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से बात कर रही हूँ। जी मैम, एक्चुअली मेरे रिजल्ट्स आ चुके हैं जुलाई 2023 के। उसमें से 2 सब्जेक्ट्स के रिजल्ट में असाइनमेंट 1 में अभी तक रिजल्ट शो नहीं हो रहा है। वो क्यों हो रहा है मैम? That may be your paper must be under evaluation process या कुछ constraint होगा. Need not worry about it. आप एक बार रीजनल सेंटर कांटेक्ट कर लीजिए और अपने रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में अपने प्रोफाइल में जाके आप असाइनमेंट सबमिशन लिंक के थ्रू स्टेटस भी चेक कर सकते हैं. ओके मैम, नहीं हुआ है तो मस्ट बी इन द प्रोसेस, वो जल्दी आपका अपलोड हो जाना चाहिए ग्रेड कार्ड में. ओके मैम, एक बार मैं रीजनल सेंटर में भी बात कर लूंगी इससे रिलेटेड. हाँ जी बिल्कुल, अपने कंसर्न रीजनल सेंटर में और लर्नर सपोर्ट सेंटर में भी, अगर वही जैसे मैडम ने बताया कि अगर आपने हमारे प्रोग्राम को पूरा सुना होगा तो आपके पास एविडेंस होनी चाहिए कि आपने असाइनमेंट सबमिट किया है. ओके मैम. जी थैंक यू सो मच मैम. ओके ओके, विश यू गुड लक. थैंक यू मैम. जी, तो हम अभी बात कर रहे थे प्रैक्टिकल एग्जाम की फी के विषय में, कहाँ से स्टूडेंट पता कर सकते हैं. हाँ, तो ये फीस जो है अब ये रिक्वायरमेंट को उनको ध्यान में रखना होगा. एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन से रिलेटेड. जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि विदाउट बॉदरिंग अबाउट देयर मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स रजिस्ट्रेशन दे अपीयर फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन. ऐसा कई प्रोग्राम्स के प्रैक्टिकल कोर्सेज में देखा गया है और जिसकी वजह से स्टूडेंट्स का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर नहीं हो पाता है. तो ये ज़रूर ध्यान रखें हर स्टूडेंट की जैसा कि थ्योरी एग्जामिनेशन के लिए जो एलिजिबिलिटी के पैरामीटर्स है फॉर मिनिमम ड्यूरेशन, वो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए भी एप्लीकेबल हैं और वो अपना कोर्स रजिस्ट्रेशन चेक करें और उसके मिनिमम ड्यूरेशन पूरा होने के बाद ही प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए अपीयर हो. इन द मीन टाइम वो अपने प्रैक्टिकल कोर्स काउंसलिंग सेशंस को अटेंड कर लें और जो प्रैक्टिकल वर्क उनका जो होना है उसको वो पूरा कर लें. जो उनकी फाइल्स तैयार होनी है और उनका जो इवैल्यूएशन होना है, ये सब जो चीज़ें हैं उनको वो पूरा कर लें ताकि जब उनकी एलिजिबिलिटी हो वो अपने प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए अपीयर हो जाए और टाइम से उनका जो प्रैक्टिकल कोर्स का रिजल्ट है वो भी डिक्लेयर हो जाए. तो ये जो इन्फॉर्मेशन होती है स्टूडेंट को इसके बारे में पहले से ही फेमिलियर होना चाहिए यूनिवर्सिटी रूल्स के बारे में, ताकि उनको जब एग्जामिनेशन हो उनके तो बाद में उनको ऐसी डिफ़िकल्टीज नहीं आनी चाहिए जिसकी वजह से उनके रिजल्ट डिक्लेरेशन में प्रॉब्लम आए. तो थोड़ा सा उनके लेवल पे अवेयरनेस और प्रॉपर इन्फॉर्म्ड रहना स्टूडेंट को ज़रूरी है. यानी हमारे स्टूडेंट्स को समय रहते ही हर चीज़ में अलर्ट रहना है और हर अपनी पढ़ाई को प्लानिंग करके सीरियसली करना है ताकि डिस्टेंस एजुकेशन में रहते हुए भी हम अपनी पढ़ाई को स्मूथली रख सके, क्योंकि डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम होने के बावजूद भी इग्नू की डिग्री का उतना ही रिकॉग्निशन है जितना अदर कन्वेंशनल यूनिवर्सिटी की डिग्री को रिकॉग्निशन मिलता है. राइट जी. तो और अब हम लोग जब एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की बात कर चुके हैं, एग्ज़ाम में अपीयर होने की भी बात कर चुके हैं, तो हमारे स्टूडेंट को अब ऑब्वियसली अपने रिजल्ट से रिलेटेड भी काफ़ी क्यूरियोसिटी और ईगरनेस रहते हैं. जैसे हमारे 1-2 कॉलर्स की हमारे पास फ़ोन भी आया. अभी प्रीवियस कॉलर ने भी बताया कि हमारा थ्योरी एग्ज़ाम का मार्क्स तो सब कुछ कंप्लीट है, रिजल्ट भी आ गया. तो ये रिजल्ट जब स्टूडेंट एग्ज़ाम देते हैं तो उनका रिजल्ट डिक्लेरेशन कब तक होता है और वो कैसे देख सकते हैं? देखिए, यूनिवर्सिटी के सिस्टम के हिसाब से यूनिवर्सिटी इज़ ऑलवेज टारगेटिंग फॉर डिक्लेयरिंग इट्स रिजल्ट विद इन 45 डेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन. टारगेट ये होता है एंड मैक्सिमम जो कोर्सेज के रिजल्ट्स जो हैं विद इन दिस स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड डिक्लेयर हो जाते हैं और जो कोर्सेज नहीं भी हो पाते हैं तो विद इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द रिजल्ट ऑल्सो गेट डिक्लेयर्ड. और ये सारा जो रिजल्ट डिक्लेरेशन है ये सब अपलोड हो जाता है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर.
तो स्टूडेंट कैन एक्सेस एनी टाइम आफ्टर 45 days on completion of the term and examinations. तो इसी में उनका पता चल जाएगा कि कौन कौन से मार्क्स उनके अपडेटेड हो चुके, कौन कौन मार्क्स उनके अपडेटेड नहीं हुए, और प्लस उनका जब सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा फाइनल चीज में, तब उनको मार्कशीट मिल जाएगी, और मार्कशीट के साथ साथ उनको प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी मिल जाएगी, राइट? और उनको ओरिजिनल डिग्री मिलने के लिए कितना समय का इंतजार करना? ओरिजिनल डिग्री जो है आफ्टर 1 year होती है. अकॉर्डिंगली जो कॉन्वोकेशन सेरेमनी होती है यूनिवर्सिटी की, उसमें जब वो पर्टिकुलर 2 sessions के लिए जब वो कॉन्वोकेशन होगा, तो अकॉर्डिंगली जिस सेशन में स्टूडेंट का प्रोग्राम कंप्लीशन है और जिस कॉन्वोकेशन के लिए एलिजिबल है, दे कैन गेट देयर डिग्री. वी अगेन हैव अ कॉलर फ्रॉम राजस्थान, आई होप सो. प्लीज लेट्स वेलकम टू आवर कॉलर. हेलो. हेलो जी, आप अपना सवाल पूछिए. मैम नमस्कार. जी मैम, मैं इग्नू जेट सेलेक्टेड कैंडिडेट बोल रहा हूँ. जी, सेलेक्टेड कैंडिडेट मीन्स? हाँ मैम, जो ये जूनियर असिस्टेंट में जो वैकेंसी आई थी इग्नू वाली. जी, आपने यानी या आप स्टूडेंट नहीं, आप फॉर स्टाफ आपने यहाँ पे अपीयर किया, राइट? वो एक हेलो, इनके कॉल में काफी डिस्टरबेंस आ रहा है. साथ में इनकी थोड़ी सी बातचीत से हमें ये पता चल रहा है कि वो स्टूडेंट ना होकर यहाँ पे अभी जो वैकेंसी अनाउंस हुआ है, इसके लिए उन्होंने जो अपीयर किया है और सेलेक्टेड कैंडिडेट जैसा बता रहे हैं. तो मैं एक बार बताना चाहूंगी कि ये जो हमारा लाइव जो टेली कॉन्फ्रेंसिंग प्रोग्राम जो है उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इग्नू से ऑलरेडी जुड़ चुके हैं और अपनी पढ़ाई जारी कर रहे हैं, और उनके लिए जितने भी स्टूडेंट सपोर्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू रीजनल सेंटर एंड लर्नर सपोर्ट सेंटर एंड ऑल्सो फ्रॉम हेडक्वार्टर्स फॉर देम इफ दे हैव एनी काइंड ऑफ query. So we are here for answering them and trying to resolve their matter as soon as possible and as much as possible. So तो अगर फिर से वो जुड़ना चाहेंगे, अपनी बात जो फिर से अपना रख सकेंगे, तो हम फिर से स्वागत करेंगे. बट फिलहाल हम अपनी चर्चा को जारी करते हैं. हम बात कर रहे थे रिजल्ट पे ही, जी, डिग्री पे, ओरिजिनल डिग्री कॉन्वोकेशन में उनको अवार्ड की जाएगी. और रिजल्ट की अगर हम बात करें तो कई बार स्टूडेंट अपने रिजल्ट के लिए अगर किसी तरह का कोई इम्प्रूवमेंट पे सोचते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसी क्वेरीज आती हैं, तो यूनिवर्सिटी की तरफ से एक तो उनको कोर्स के रीवैल्यूएशन की फैसिलिटी अवेलेबल है, बट उसको कंडीशनली दे कैन अप्लाई फॉर इट. और इसका जो फॉर्म है वो इग्नू की वेबसाइट पे अवेलेबल है, एंड विद इन 30 days ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ देयर टर्म एंड रिजल्ट ऑफ द कोर्स दे कैन अप्लाई फॉर इट्स रीवैल्यूएशन. और फर्दर अगर एक स्टूडेंट हमेशा एंक्शस होते हैं अगर क्या वो किसी तरह का कोई इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, तो कोर्स वाइज इम्प्रूवमेंट जो है यूनिवर्सिटी की तरफ से ये परमिसिबल नहीं है. हाँ, लेकिन जब उनका प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है तो वो डिवीजन को इम्प्रूव करने के लिए ज़रूर इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं, और उसकी भी कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि अगर स्टूडेंट इज एस्पायरिंग फॉर. जी प्लीज. Let's welcome to our caller from Kolkata. Hello. हेलो, मैं प्रीति वर्मा बोल रही हूँ. नमस्ते मैम. मैं FSQM MSc में एडमिशन लिया था 23 जनवरी, और किसी कारणवश मैं एग्ज़ाम नहीं दे पा रही हूँ इस साल, और मैंने सबमिट भी नहीं किया अपना असाइनमेंट. लेकिन मेरे पास री रजिस्ट्रेशन का ऑनलाइन में भेजा गया, तो क्या मैं री रजिस्ट्रेशन कर सकती हूँ या मुझे नहीं करना होगा? आपका एक बार कोर्स है. नहीं, पहले बताइए अपना प्रोग्राम एक बार थोड़ा सा क्लियरली मेंशन कीजिए. आवाज काफी धीरे आ रही है. आप अपना प्रोग्राम बताइए. आप थोड़ा क्लियरली बता दीजिए अपना प्रोग्राम का नाम. मेरे प्रोग्राम का नाम है फूड सिस्टम एंड क्वालिटी मैनेजमेंट. तो ये 1 year का प्रोग्राम डिग्री है या सर्टिफिकेट? ये 2 years का प्रोग्राम है MSc का.
जी देखिए, अभी कुछ देर पहले हमने एलिजिबिलिटी की भी बात की थी, एग्जाम में कौन से लोग एलिजिबल हैं। फिर भी हम इस आपके सवाल का जवाब देते हुए हमारे और कॉलर्स के लिए, व्यूअर्स के लिए भी एक बार रिपीट कर देते हैं। प्लस री रजिस्ट्रेशन की बात भी हम अपने कार्यक्रम के दौरान डिटेल में चर्चा करेंगे, बट आपके सवालों का जवाब देते हुए इस बात का भी आंसर देंगे प्लीज। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है। देखिए, अनलाइक कन्वेंशनल मोड, इग्नू जो कि ओडीएल सिस्टम पे फंक्शन करती है, उसमें स्टूडेंट्स को ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि इवन इफ दे आर नॉट एबल टू अपियर फॉर अ टर्म एंड एग्जामिनेशन, दे कैन स्टिल गो फॉर देयर री रजिस्ट्रेशन। आप अपना नेक्स्ट ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन जरूर करा लीजिए, क्योंकि अदरवाइज जो है, अगर आप ये साइकिल मिस कर जाएंगे री रजिस्ट्रेशन के लिए, तो आपका फर्दर जो गैप आ जाएगा, एटलीस्ट फॉर 6 मंथ्स का गैप आ जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट री रजिस्ट्रेशन साइकिल आपका जुलाई 2024 के लिए अवेलेबल होगा। तो बेटर है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए फॉर सेकेंड ईयर, और अगर आप अभी दिसंबर में एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं तो आप जून 2024 में अपने फर्स्ट ईयर के कोर्सेज के लिए अपियर हो सकते हैं। आई थिंक ये अभी एलिजिबल भी नहीं थे, क्योंकि 23 में आपने, जुलाई 23 में आपने एडमिशन लिया, राइट? जी, मैं जनवरी 23 में एडमिशन। ओके, सॉरी, नो इट्स ओके देन। एनीवे, री रजिस्ट्रेशन आपको कराना जरूरी है, और इस बार आप नहीं भी दे पाए तो जून 24 में जरूर आप कोशिश कीजिए। जी, थैंक यू। जरूर अटेम्प्ट कीजिए, और असाइनमेंट सबमिट करने की भी बिफोर द डेडलाइन। ओके, थैंक यू मैम। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। तो हम डिग्री की बात आई थिंक लगभग कर चुके हैं, पर इससे नहीं, डिग्री में हम लोगों ने बात तो शुरुआत तो की, हमें एक साल का इंतजार करना पड़ेगा, बट इसके लिए कन्वोकेशन की बात आपने बता दिया। बट कन्वोकेशन होने से पहले स्टूडेंट को एक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से भी गुजरनी पड़ती है, वो इसके विषय में हाँ, वो डिग्री की जब वो एलिजिबल हो जाए डिग्री अवार्ड के लिए, तो यूनिवर्सिटी की तरफ से एक लिंक अवेलेबल होता है वेबसाइट पे फॉर रजिस्ट्रेशन, तो उसमें उनको रजिस्टर जरूर कर लेना चाहिए, और उस डिग्री के लिए जो रिक्वायर्ड फ़ी है वो उसमें सबमिट करा दें, तो फर्दर उनका जो है वो प्रोसेस में आ जाएगा, और जिस ऑप्शन को वो एक्सरसाइज करेंगे अकॉर्डिंगली उनको उस मोड से उनको डिग्री जो है दी जाएगी, बट इट इज़ ऑलवेज आफ्टर द कॉन्वोकेशन। Yeah, and one more thing is that from last to last convocation onwards, that now student can also download their degree online, right? जी, उसका भी we have instruction given in website. Instruction is available how to download online degree. Yes, that is also available. Online digital mode के लिए भी वो जा सकते हैं। Yes. आप लिंक थोड़ा शो कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं उनको लिंक अभी शो कर देती हूँ। वी आर ऑन द सेम पेज। ये स्टूडेंट जोन में ही फर्स्ट जो लिंक है वो अवेलेबल है, डिजिटल डिग्री। तो इसके थ्रू वो अभी अपना जब भी उनको डिजिटल डाउनलोड करना हो डिग्री, तो इस प्रोसीजर को भी वो फॉलो कर सकते हैं। There are, I think, almost 8 steps to be followed for student के interest के लिए, मतलब उनके advantage के लिए, benefit के लिए इस steps को उनको clearly specify किया गया है। अगर student ध्यान दे के seriously इन steps को follow करेंगे तो उनका digital mode में डिग्री भी मतलब easily मतलब डाउनलोड हो जाएगा, और डिजी लॉकर में भी मिल जाएगा, राइट? जी, बट इसके लिए भी उनको जो एप्लीकेबल फी 600 रुपीज एज ऑफ नाउ वो चार्जेबल, वो पे करना ही पड़ेगा। दैट इज मैंडेटरी एज ऑन डेट, राइट? हाँ जी, बिल्कुल जी। तो अब हम लोगों ने डिग्री की भी बात की, और आपके हमारे डिस्कशन के दौरान आपने री इवैल्यूएशन की बात पे थोड़ा सा टच मतलब किया था, बट और आपने ये भी बताया था कि स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम में स्टूडेंट को अप्लाई करना पड़ेगा। फिर भी
इस री इवैल्यूएशन को लेकर स्टूडेंट के दिमाग में एक और क्वेरी ये बैठती है कि अगर जैसे मान लो स्टूडेंट ने जो ओरिजिनल जो फर्स्ट टाइम उन्होंने स्कोर किया है वो कम है और फिर री इवैल्यूएशन करने के बाद भी उनका और कम आया, तो उनका कौन सा मार्क्स मान्य होता है? कई बार स्टूडेंट हमारे पास ऐसे प्रॉब्लम को लेकर भी आते हैं, तो प्लीज। रिवैल्यूएशन के लिए अगर स्टूडेंट अप्लाई करता है तो जो उनके जो बेस्ट स्कोर होगा प्री रीवैल्यूएशन और जो रीवैल्यूएशन के रिजल्ट में जो स्कोर आता है उसमें जो बेस्ट स्कोर होता है वही उनके ग्रेड कार्ड में रिफ्लेक्ट रहता है। कि मान लीजिए स्टूडेंट के पहले जो मार्क्स थे वो अच्छे थे और रीवैल्यूएट कराने के बाद मार्क्स थोड़े कम हो गए हैं, अगर ऐसा केस है तो जो उनके ज्यादा वाले मार्क्स हैं, जो बेटर स्कोर है उनका, वही ग्रेड कार्ड में अपडेटेड रहेगा। जी, इसका मतलब स्टूडेंट को चिंता करने वाली बात नहीं है कि री इवैल्यूएशन के बाद भी अगर उनके मार्क्स बहुत ज़्यादा ही कम आ गए और जो पहले के मार्क्स जो उनका फिर भी ठीक था, तो स्टूडेंट को घबराने की जरूरत नहीं है, जो बेटर स्कोर को ही कंसीडर किया जाएगा, राइट? जी। सो आई होप आज हम एग्जाम से रिलेटेड जो बातों पे हमने काफ़ी विस्तृत रूप से चर्चा की, और भी हमारे स्टूडेंट जो सवाल पूछना चाहते हैं तो दे आर मोस्ट वेलकम। वी आर स्टिल हियर फॉर फ्यू मोर टाइम। एंड अब हम क्योंकि कुछ स्टूडेंट अपने कॉल के माध्यम से री रजिस्ट्रेशन की बात पे आ चुके हैं, तो री रजिस्ट्रेशन के विषय में भी बातचीत करना अभी बहुत रेलिवेंस है। तो प्लीज मैं री रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया क्या है और इसकी अंतिम तिथि मतलब कब है और इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम कैसे देख सकते हैं, प्लीज डॉक्टर एकता। री रजिस्ट्रेशन जो है क्योंकि आफ्टर टेकिंग एडमिशन वो उनका फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन होता है, तो हर सेमेस्टर में और हर ईयर में, जैसे कि अगर एनुअल बेस्ड प्रोग्राम है तो ईयरली उनको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है फॉर गोइंग फॉर फर्दर स्टडीज इन दी नेक्स्ट ईयर। एंड लाइकवाइज अगर सेमेस्टर बेस्ड है तो उसमें उनको नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए री रजिस्ट्रेशन कराना होता है। ये इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है अपने प्रोग्राम को स्मूथली फर्दर परस्यू करने के लिए। प्लीज वी हैव वन मोर कॉलर फ्रॉम जम्मू कश्मीर। हेलो। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। मैम मैंने जून 2023 में मेरा लास्ट ईयर था बीएजी का। बीएजी का लास्ट ईयर 23 में? ओके, हाँ जी। जून में मैंने उसका एग्जाम दिया, कंप्लीट किया। उसमें एक कोर्स था BAPI 3। अच्छा। उसमें प्रैक्टिकल से पहले तो आरसी वालों ने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया सर इसमें प्रैक्टिकल से, उसका कोई डेट नहीं निकाला आरसी श्रीनगर ने। उसके बाद मैं फिर खुद आरसी गया, आरसी श्रीनगर पहुंचा और उन्होंने बोला आप स्टडी सेंटर में आप प्रैक्टिकल सबमिट करो, फिर वो अवार्ड भेजेंगे तो हम वो आपको वो स्टेट्स कंप्लीट दिखाएगा ग्रेड कार्ड पे। जी मैम फिर मैंने जब वहाँ पर सबमिट भी किया, उन्होंने उनको मेल की है आरसी वालों को, बट वो अब बोल रहे हैं यहाँ पर हमें नहीं पूछे। सर मैम मुझे 3 महीने हो गए, मेरी डिग्री इसी वजह से कंप्लीट नहीं हो पा रही है मैम। तो यानी आपने प्रैक्टिकल दे दिया है? सबमिट कर प्रैक्टिकल दे दिया है मैम। अच्छा, तो मतलब आपने LSC में दे दिया और आपने आरसी से भी, अपने कंसर्न आरसी आपने जम्मू बताया, राइट? जम्मू या श्रीनगर? श्रीनगर मैम। अच्छा, तो श्रीनगर में आपने कांटेक्ट किया आरसी श्रीनगर में अपने प्रैक्टिकल्स को लेकर और उन्होंने बताया कि अभी नहीं हुआ है मैम। और आरसी जहाँ पर मैं एग्जामिनेशन सेक्शन में गया, उन्होंने अभी तक डेट भी नहीं निकाली थी। मैंने जबरदस्ती उनसे बोला इसमें प्रैक्टिकल, उनको पता ही नहीं था फॉर्मेट क्या प्रोसीजर है इसमें, इस प्रैक्टिकल में। मैम बहुत ही तंग किया वहाँ पर। नहीं, कोई बात नहीं। जहाँ तक इन्फॉर्मेशन की बात है, आपने कुछ देर पहले ये बताया कि आरसी श्रीनगर ने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया। तो देखिए, आपको हमने पूरे प्रोग्राम में एक ही बात बार बार रिपीट किया है कि स्टूडेंट को कोई भी इंफॉर्मेशन अपने एकेडमिक सपोर्ट के लिए चाहिए तो आपको आरसी श्रीनगर की वेबसाइट को चेक करना चाहिए, क्योंकि अपने जी बताइए। डेली था, उन्होंने कोई वहाँ पर शेड्यूल ही नहीं अपलोड किया। शेड्यूल यानी प्रैक्टिकल का शेड्यूल भी अपलोड नहीं किया? नहीं किया मैम, नहीं किया। कोई बात नहीं, आप थोड़ा इन्फॉर्मेशन से चूक गए होंगे, बट अगर आपका इश्यू जेन्युइन है तो आप एक बार आरसी
श्रीनगर को जो है एक रिमाइंडर मेल आज के टेली कॉन्फ्रेंस का रेफरेंस देते हुए कर लीजिए, और प्लस यही सेम ईमेल rst@ignou.ac.in में भी आज का टेली कॉन्फ्रेंसिंग का रेफरेंस देते हुए प्लीज अपने मतलब जो ग्रीवेंसेस को मेंशन कीजिए विद योर इनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम एंड प्रैक्टिकल जो आपने सबमिट किया, अगर आपके पास कोई एविडेंस हो तो। ठीक है? ओके मैम, मैंने कल मेल की थी rcd.in पे, वही उसकी ईमेल पे। और सर मैम मेरा जो इलाका आता है वो 70 किलोमीटर दूर आता है श्रीनगर से। मैं बांडीपुरा गुरेज साइड से हूँ मैम। तो 2-3 बार मैंने वहाँ के चक्कर लगाए, बट वहाँ पर कोई नहीं, मैं अभी आपको ये चक्कर लगाने के लिए नहीं कह रही हूँ, आपको ईमेल लिखने के लिए कह रही हूँ rst@ignou.ac.in एंड ये कॉपी टू करना, पर पहले तो आप अपने कंसर्न रीजनल सेंटर श्रीनगर को कर दीजिएगा। ठीक है? ओके मैम। आपका जो इनरोलमेंट नंबर और ये सब लिख के। ठीक है? ओके मैम, थैंक यू। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। ओके मैम। तो हम ये कॉल को लेने से पहले हम री रजिस्ट्रेशन की बात शुरू कर रहे थे जी। तो स्टूडेंट्स को जो है अपना टाइम से री रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। और जैसे कि अभी स्टूडेंट की क्वेरी पे भी हमने कहा था कि अगर स्टूडेंट एग्जाम में नहीं अपीयर हो पाता है, जैसे फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, फर्स्ट ईयर के एग्जाम भी आ गए, शेड्यूल आ गया, किसी कारणवश अगर स्टूडेंट एग्जाम में नहीं बैठ पाता है तो वो चिंता ना करे, अपना नेक्स्ट ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन जरूर करा ले। और नेक्स्ट जो टर्म एंड होगा, क्योंकि उनका फर्स्ट ईयर का मिनिमम पीरियड पूरा हो चुका है और अगर उन्होंने असाइनमेंट भी अपने सबमिट करा लिए हैं, तो वो नेक्स्ट जो 6 महीने के बाद दोबारा से इग्नू के एग्जाम्स होंगे तो उसमें वो अपने अपीयर हो सकते हैं। इस तरह से वो अपना साइकिल को मेंटेन करें ताकि जो प्रोग्राम कंप्लीशन है उसमें किसी तरह का कोई डिले ना हो और वो अपने प्लानिंग के हिसाब से विद इन देयर रिक्वायर्ड पीरियड ऑफ मिनिमम ड्यूरेशन वो अपना जो है कंप्लीट कर सकें प्रोग्राम, और टाइम से अपना डिग्री, और अगर उनका सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट आफ्टर कंप्लीटिंग देयर मिनिमम पीरियड दे कैन ऑब्टेन इट। एंड नाउ यूनिवर्सिटी ने री रजिस्ट्रेशन का पोर्टल ओपन कर चुके हैं और इसका लास्ट डेट है जनवरी 29, 2024 विदाउट लेट फी, क्योंकि अब री रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में भी लेट फी का प्रावधान ये हो चुका है। राइट जी बिल्कुल, री रजिस्ट्रेशन में भी बिल्कुल। तो हमारे स्टूडेंट को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि लास्ट मिनट से पहले कोई किस्म का हैसल ना रखे, तो री रजिस्ट्रेशन की अपनी प्रक्रिया जरूर कराएं बिफोर जनवरी 29, 2024 विदाउट लेट फी। अगर इन केस किसी मतलब हम डेट बढ़ भी जाएगा तो यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे आप लोग रेगुलरली चेक करें। जी, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और आज हम लोगों ने काफ़ी बातें की री रजिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन को लेकर, और आपने हमारी इतनी सारी इम्पोर्टेंट इश्यू पर हमारे साथ चर्चा किया। आई वुड लाइक टू थैंक डॉक्टर एकता शर्मा फ्रॉम रीजनल सेंटर दिल्ली 3. Thank you so much, and we hope to see you again like this way, and then so that we can resolve our students' problem as much as we can. और प्लीज़ मैं अपने लर्नर्स को अपील करना चाहती हूँ कोई भी लास्ट डेट को मिस ना करे, क्योंकि हम हर प्रोग्राम को इस प्रोग्राम में अपने सारे लास्ट डेट्स जो भी यूनिवर्सिटी ने अनाउंस किया है हम रिपीट करते रहते हैं। प्लस इग्नू का वेबसाइट रेगुलरली चेक करते रहें, और सभी हमारे स्टूडेंट्स को टर्म एंड एग्जाम के लिए विश यू ऑल द बेस्ट कहना चाहती हूँ। और हमारा ये प्रोग्राम पुनः प्रसारण होगा रात के 8 बजे। सो टिल देन गुड बाय एंड स्टे सेफ। थैंक यू। थैंक यू।
Are you interested in television journalism or radio journalism or online journalism? Or do you want to learn with the flexibility of open learning? Or if you are a working professional, wants to enhance your knowledge and skill with certification in the field of electronic media, then School of Journalism and New Media Study IGNOU offers PG Diploma in Electronic Media for you. This program includes audio and audio-visual program production for radio, television and online platforms. Here are some important details about the program. We have total 8 courses of 32 credits, 6 theory courses, 1 practical and 1 project. Eligibility: bachelor's degree in any subject. Minimum duration 1 year, maximum 3 years. Medium is English, but students can write their examinations, assignments, practical and project in Hindi also. So if you are interested in television, radio or online media, please come and join IGNOU's PG Diploma in Electronic Media. Dear learners, welcome to live teleconferencing session. This is Dr. A. Senthamizh Kanal from the Faculty of Public Administration, School of Social Sciences, Indira Gandhi National Open University. In this session, I will discuss about the public policy in the context of liberalization, privatization and globalization. This topic is coming under the one of our core courses of BA Public Administration Honors. The course title is BPSC 106 Understanding Public Policy. So, in the series of public policy, first we have to understand that so far we have studied a lot about how the ideology impact the public policy, like the nationalist ideology, how it changed the public policy, how the socialist ideology, how it impact the ideology, and how the capitalism has made the impact of ideology. So likewise, now we are going to discuss about how the liberalization, privatization, globalization, we used to call the LPG. It is one of the buzzword you can say since 1919 onwards. Normally, public policy is one of the major component, okay, in of the society and government. We are, you can't say that public policy started recently or 50 years before, 100 years before. When the people have started living together, when the community started living together, then time itself it has started the public policy. We can say policy. We used to hear about the word national education policy, national health policy, national wage policy, national agriculture policy, foreign policy. So frequently we used to have the time. So in that sense, mostly public policy, what used to happen is that it used to focus upon the public and its problem. Okay, mostly it used to focus upon the public and its problem. Like for example, as a student of public administration, we all know that first
when before that public policy cycle is there, pre-public policy, during public policy, and post-public policy. In the pre-public policy, first we used to say that first important step is that identification of the problem. Okay, without problem, you can't make a policy at all. So that way, John Dewey in 1972, he said that public policy means public policy focus upon the public and its problem. Okay, and mostly it focused upon the how the issues and problems come to be defined and constituted, and how they are placed on the political and party agenda. Like for example, you can say that now recently we have heard about the word new national agriculture, new agriculture policy, new educational policy, and now, so why they are bringing about the new everything is there. So already they are changing towards the dimension, or changing towards the time of that only. That education policies depends on that time only. So we are moving into the new era that, due to information and the technology, we are living in a globalized world. So for that, okay, the changes always used to be there, because most of the time the changes would be there. Dynamism is to be more important one. So that's what we used to have a national new education policy, new agriculture policy. Due to upon the latest development in the information technology sector, we are getting the new IT policy, and now due to the artificial intelligence, now they are talking about the responsible artificial intelligence plan or program. So many things used to be there. Mostly what will happen is that how it concerned with the issues and the problem has been defined and constituted, and they placed upon the political and party agenda. In the political and party agenda, for example, if the nationalist party is ruling the government, the policy used to, that interpretation would be different. If it is the socialist government, then that interpretation is to be different. The policy would be socialism. And if it is the capitalist government is ruling the state or country, then that most of the time they mostly focus upon the market oriented only. Instead of people, they give more importance to market. So likewise only, most of the time the public policy means how they are placed for the political and party agenda and all. And also they used to say how and why and what government do the particular courses of action and inaction. Okay, like whether if you look into that, whenever most of the time the success or failure of the government determined by the public policy, that policy how they have handled it. So most of the time how and why and what government pursue particular courses of action and inaction. Okay, so most of the time what will governments do and why they have to do it. Okay, and what difference make it. These are the things more important. What governments do and why they do it, and what different it makes. Like for example, if it is a socialist government too, when we are moving into the socialist capitalist kind of a state. So what governments do and what kind of a policy or what kind of a action they used to do and why they have to do, and when they are doing that, what kind of a that impact used to be there. So the nature, causes and effects of public policy is that various things are there. So in that, see, most of the time, so in that continuation, public policy has been placed as a more important only. As I already said that success or failure depends upon the public policy only. So what happened in that light, after 1990, India's new economic policy reforms. So based on that reform, they have opened, like they have introduced the liberalisation, privatisation and globalisation. So what happened is that they have changed our, like earlier we used to have a socialist policy. Now after this, what happened, that we have had a kind of a market oriented policy and all. So why it happened?
actually why we have changed towards the LPG. The major reason, if you see that most of the liberal democracies like United States of America, United Kingdom, and India, they are facing some kind of a same issue, that is crime, unemployment, environmental pollutions, arms race, and spread of health hazard caused by the disease and the aging population. So, based upon that only, what happened is most of the time these are the issues are occurring continuously with the throughout the global only. So the what happened that based on that the national policy agendas are being largely shaped and formulated based upon the events of liberalization, privatization, and globalization only. So before going into that, why it's important, nature of the state or context of the state is more important to study the public policy. If you understand you understand the nature or utility of public policy, it's very important to understand the state rule. So as I already mentioned many times, that whether the state is anarchy, whether the state is socialism, whether the state is following the communalism, whether the state is following the nationalism, whether the state is following the right wing or left wing, so many things. So most of the time that public policy is shaped upon the nature of states only. At the outset, okay, it may be emphasized the role of the state changes within the nature of the state only. The present nature of state, sometime what will happen differs greatly from the scene in the preceding 2 centuries, like for example especially before 1945. In the beginning of 1945 significant changes has been taken place, and so that time what will happen after independence, or most of the time we have spent on how to form the government and how to structure our administrative places, and another thing is that how to make a rules and regulation. That time only we have created a number of institutions, constitutional commissions, institutions like Union Public Service Commission, University Grant Commissions, national, so many commissions, institution has been created during that time only. So most of the time, so if you compare our policy in 1945 or you compare our policy in 1980 and now is entirely different. Due to that, world has been changed a lot, the issues of the world has been changed a lot. And after that, what happened after World War II, the independence of former colonies has been one of the most important events. Like for example, from independence from dependence. So after independence, what will happen, how they have to manage on their own. So this has been made a lot of changes in Asia, Africa, and Latin America, and other parts of the world. Like if you look into that, most of the developing countries like Asia, Middle East, Africa, they have come out from the colonial world with a strong belief that they need a state-dominated economic development. Okay, after the World War, they got a independence. After independence, they have started living like in a dependence mode. In the dependence mode, mostly they have fall into the they want to make a country like a state dominated economic development. So the state would mobilize the resources and people and direct them towards the economic growth, and mostly like once you have become a independent country, the major focus used to be there, economic growth used to be there, and the eradication of the poverty and social injustice. So state control of the economy are the, like for example, you can say that Soviet Union was the central to the strategy and all. So after that, what happened? The new interventionist philosophy. Okay, they started an interventionist philosophy. Their focus is that counterpart in the development strategy of the day, adopted by many developing countries, like independence with emphasized on the prevalence of market failures and accorded the state and central role in correcting them also. And most of them, they have a centralized planning and corrective interventions in resource mobilization, and heavy state hand in industry development were part and parcel of the strategy. For example, here centralized planning, when we got independence in the 1947, after that,
after that, like for example, you can take that in 1990s only we have given a 73rd 74th Amendment Act. So it took so long. Before that, what happened that most of the focused upon that they need a centralized planning and they need a how to corrective resource allocation, and most upon the time they used to focus upon the industrial development also, and many of the time development goals. If you look into that after the 1970s, like you can say that 1976 to 1980, the policies are mostly achieve these goals reflected in the national development plans of developing countries. Mostly they used to be there industrial development, eradication of poverty, and a proper way of resource allocation also. Most of the time, what used to happen in their plans, the focus of the policy is that expansion and diversification of the products and goods, and increase the employment opportunity and improvement in both the level and distribution of income, that elimination of poverty and increase in the self-reliance and carrying out the developmental task, and you can say that mobilization of natural, human and financial resources in the common causes of national building. So in the 1940s or otherwise 1940s to 1990, most of the time what used to happen, constructing, building many institutions and building many educational institutions, commissions, and most of the time our focus is upon the industrial development, and most of the time we used to give away from the extreme poverty, and we have to create a social development program for the to avoid the eradicate the extreme poverty, and have to create a more employment opportunity for the people, and that nation has to totally depends upon the self-reliance on also. But at the cost of state intervention and the development strategy suddenly exposed it, what happened is that it made into the debt crisis in the 1980s, and the oil prices also plunged into that only. And after that 1980s, then what happened, the collapse of the Soviet Union shook the centralized planning model based upon the state activism. Okay, that United States of Soviet Russia has been collapsed. It give a great shock to the centralized planning model based on the state activism, and suddenly what happened, government failure, including the publicly owned farms, and seemed everywhere glaringly evident also. And what happened is government began to adopt policies designed to reduce the scope of state intervention in the economy also. State curbed the development in that production, prices and trade, and strategies. Most of the time what happened is these kind of a strategy happened into the developing world. The pendulum has been swung state dominated development model of the 1960s and the 1970s, after that minimalist state of 1980s and 1990s. So with such radical shift after the USSR collapse, the centralized planning has been collapsed. So to meet the interest obligations, countries debt squashed critically important programs like, for example, education, health, infrastructure. As often they cut the low priority programs, and they have bloated the state enterprises and civil service roles. So most of the time the result, most strikingly in Africa, the former Soviet Union, and even parts of Latin America, was neglect of the state vital function. And what happened, these kind of things has been threatening the social welfare and eroding the foundations of market development. So the effect of rejection of government has shifted the attention from the debate of state versus market to mere a fundamental crisis in states' capability. In some countries, the crisis had led to the outright collapse of the state. In other parts, the rise of states' capability has led non-government organization and people's organization, civil society. So mostly they try to take the place in the role of state.
in their embrace of markets and rejection of state activism, many have wondered whether the market and civil society could ultimately supplant the state. But the lesson of a half century of thinking and rethinking of state's role development more nuances, and state dominated development has failed. Without that, what happened? It brought to the stateless development. Development without state is impossible, and also. So, in that time, what happened that World Bank, in its World Bank development report, they have given a too prolonged strategy to improve the state ability to enhance economic and social welfare. So if you see in our 1940s to 1990s, many they have witnessed failure of the central planning and failure to cope up with the oil prices and the failure to cope up with the industrial development. So many things slowly happened throughout the newly independent countries and all. So in that scenario, World Bank has published a report, the World Bank Development Report. In that, they have suggested two strategies. In that, first strategy, or you can say first task, is to that match the state's role to its existing capability, and second one is that reinvigorate the state capability through partnership and competitive pressure outside and within the state. So both of the first thing is that you have to find out the existing capability of your state's role, and you have to find out improve the capability through partnership and what you can say that competitive pressure outside and within the state and also. Because most of the time policies are made nationally, but they used to govern by the globally in the LPG context also. In that context, prior to new economic policy, that is before 1991, the central government has imposed various controls on the Indian economy, like industrial licensing system, price control, and import of restriction, foreign exchange control. So these are the things it has been dampened the enthusiasm of the entrepreneur to set up a new industries. Like now also people used to say that that license era has been changed, and most of the time earlier, if you look into the 10 years before, they have started the single window system for the environmental clearances. So these give a new, when you have a more restriction, it used to happen undue delay, it create the corruption, it created the inefficiency, and it created the ineffectiveness. Due to all these factors, many people has been, that they have hesitated to create or to start a new business or new industry in the developing countries and all. So, based on that context, what happened? The new economic policy has been launched in the year of 1991 as a policy measure. The assumptions that market forces could guide the economy in more effective manner than the government and portal and all. So the basic, the basic you can say that the fundamental objective of new economic policy is that to bring out the new market forces, market-based economy and also. In that, if you look into that policy in the context of liberalization, a important role of liberalized policy is that to ease government controls and encourage economic development. Actually, the major thing is that to reduce the role of the government and for what? To encourage the economic development. For that, liberalization considered as a method of how a state raises limitation on some private individual ventures. In other words, we can say putting into the end these limitation and open multiple areas of economy. There was, we have launched the new economic policy in 1991. The government has regulated the private sector organization to conduct a business organization with fewer restrictions. For developing countries, it has opened economic borders to foreign companies and investment. The objective of liberalization has been put to an end
to those restrictions which are hindrances in the development and the growth of the economy also. As I already mentioned that you can say that red tapeism, undue delay and corruption, ineffectiveness. What happened is that these are hindrances in the development and the growth of economy. If you loosening the growth of the, or you can say loosening the government control or lessening the role of the government, it made trade matters and industries restriction in liberalized policies. And also based on that new economic policy was launched in India in 1991 as a policy measure that market forces could guide the economy in more effective manner than the government control. Here the important role is that liberalized policy is that easy government controls and encourage government economic development also. And most of the time liberalization regarded as a method like how a state raise limitations on some private individual ventures. So what the major idea is that to ease these limitations and open multiple areas of economy in the liberalization era. So in that the basic objectives of liberalization of policy is that it used to the primary objective of these policies to make the economy fastest developing economy in the globe with the capabilities that help in match up with the biggest economies in the world. So based on that, the objectives are that increase competition among domestic industries, encourage foreign trade with other countries with regulated imports and exports, encourage foreign capital and technology, and expand global market frontiers of the country, and attempt to diminish the debt burden of the country. So like for example increase competition among the domestic industry in the sense you can have a instead of monopoly you can have a many people can participate in the industrial development, and you have to encourage the foreign trade. Like for example many we have after the new economic reform you can see witness the how the cities has been developed like Bangalore and Noida, Gurugram, how the software industry has been developed, and now the many outsourcing industry has been developed in India, and many like for example recently Apple has in started their company own production cows in India. So likewise only it that it encouraged the foreign trade and it with the regulated imports and exports. You can see the word regulated. Okay, that regulation used to be with the state only, and due to that what happened is that it used to improve the increase the employment opportunity. Once they increase the employment opportunity, it always eradicate the poverty, it improve the lifestyle of the people, and also it break that liberalization break the market frontiers of the country, and it also reduce the debt burden of the countries also. So that most of the time the liberalization policy, whether it is a partial privatization or a full privatization of government institutions or assets or greater market flexibility and low tax for business and less restrictions on both domestic and foreign capitals and open market and so on. Like here liberalization means you have to reduce the tax slab. Okay, if you give the more tax slab to any country where any industry, that they used to hesitate to start a business in that country, and you have to make them, like for example acquiring land, and you have to make the business more easy, so that only they will come and install or they start the business in the country or any state. And also so like the same way many times what will happen liberalization is liberalizing the rules and regulation. Now we are looking into the policy in context of the privatization. It would be mistake to overtook the significance and contribution of the private sector
towards the enrichment of the countries and also. So here you can say that you can see the minute difference between the liberalization and privatization, and most of the time what will happen, like as I already mentioned, that liberalization in the sense to reduce the control of the state towards the business. In that, after the short break, we will discuss about the how the privatization and globalization has been shaped the public policy and all. Do you wish to be part of a television studio like this, or any other media system, or already part of any media system, want to enhance a new set of skills? Welcome to School of Journalism and New Media Studies. Here in the School of Journalism and New Media Studies, we are offering program for all set of people to learn and enhance their media skills. The vision of School of Journalism and New Media Studies is to generate a new set of professionals in the area of media and communication studies with understanding about role of media in the national development and global understanding. We offer innovative programs in the field of journalism and mass communication that sets a benchmark of high quality learning and teaching process at the national level. We offer these programs across the country with the help of our regional network as well as study center. Same manner, many of our programs are offered through online mode with a sophisticated learning management system. SOGNMS offers programs from PhD in journalism and mass communication till certificate level. We have masters in journalism and mass communication. The eligibility is bachelor's degree, and we are introducing this program in 3 languages: Hindi, Tamil and English. Students from national and international students can join either through online mode as well as in the distance mode. We have 4 postgraduate diploma programs, specialized areas in the field of development communication, digital media, electronic media and journalism and mass communication program. And all these 4 programs are available in distance mode. 2 programs are available in online mode, development communication and digital media. And we have specialized certificate program in community radio. IGNOU employs various media and communication tools for better teaching and learning process. School of Journalism and New Media Studies utilizes this media system for delivering all our programs. Come and join with us for exploring a new career and enhance your media skills. Dear learners, welcome back. In our previous session, we have discussed about how the nature of the state has been changed the public policy and how the liberalization impact the public policy and all. Towards the continuation, now we are discussing about the policy in the context of privatization. Mostly public policies encompasses it's a spectrum of goals and objectives.
It does include policy governing private organization to carry the public functions and all. And private section organization come into existence under various laws and practices, but government companies can be converted into private companies in two ways. That is, one is that by disinvestment, and another one is that by withdrawal of governmental ownership and management of public sector companies. Disinvestment means it is a kind of a act of selling equity shares of public enterprises to the private sector. The disinvestment means we can do two ways of privatization. One is that disinvestment, another one is the withdrawal of governmental ownership and management of public sector companies. Like disinvestment means that act of selling the equity shares of public enterprises to the private sectors and also. So in that when 100% of ownership of private asset is transferred to the private sector, okay, it is called the denationalization. Actually, in that privatization also many things are there. One is that denationalization, partial privatization. Like in the denationalization means like 100% of the ownership of the productive asset is transferred to the private sector players. That is called the denationalization. That is, for example, we can say that Bharat Aluminium Company and privatization of Delhi and Mumbai airport, and recently we have witnessed the privatization of the Air India and also. And another one is that partial privatization. Partial privatization in the sense when private sector owns more than 50%, okay, but less than 100% of the ownership is previously constituted public sector company by a transfer of share is called the partial privatization. It means that more than 50 and less than 100 also. So in that way, the private sector owns the majority of the shares. Consequently, what used to happen is that the private sector possesses substantial control in the functioning and autonomy of the company under. In one of the comprehensive ways, like for example public sector management, there is a Organization for Economic and Cooperation Development in that reported that most popular initiative among the member state, okay, they have said that in the what the privatization is doing, that the first role is that deconcentration of central government, development of agencies, reorganization of public enterprises, limits to the public sector, privatization, decentralization, new role of central management bodies, and market type mechanism. Like for example, deconcentration of central government. Deconcentration of central government is in the sense that you can power, okay, centralize, instead of centralizing the power, decentralize the various agency. Like for example, in India now we have divided into three ways: state, central, and the local. And another one is the development of agency. Create a more agency instead of one agency managing everything, and reorganization of public enterprises. Okay, earlier we used to have a rigid public enterprises due to the information technology. To reorganize that and reduce the limits of the public sector, improve the privatization and increase the decentralization, and give new role to the central management agencies. And another one is the market type mechanism. So throughout the OECD countries, the picture is mostly impact the objective design to make public sector in moving into the private sector, to bring the delivery of public services closer to the citizens and all. So in that the major objectives of privatization policy is that improve the financial situation of the government, as we already discussed, that due to the debt that privatization has introduced, to improve the financial situation of the government, to reduce the workload of public sector companies, and raise funds
from disinvestment, increase the efficiency of government in organization, provide better and improved goods and services to the consumer, and create a healthy competition in the society, and increase the foreign direct investment in India. These are the major objectives of privatization policy and all. So mostly is that to improve the financial situation, and through raise funds from the disinvestment, and encourage the foreign direct investment and all. These are the major objectives of privatization of policy. Now we are moving into the discussion about the policy in context of globalization. Okay, everyone heard the word like globalization. Globalization also like the term liberalisation and privatization. It also popular like other words. However, this word globalization has created a various conceptual, intellectual, political, economic, and social reactions. Okay, like now we always used to say that the universe is the global village. That recently we had that pandemic like COVID. It has proved the entire world is like a global village only. That because the globalization, because there is one problem in country, it has impacting another country. Like for example, few years back there was a flood in the Thailand. It has hardly hit the computer hardware production. The same way due to COVID, it has it has affected the logistics supply of the various products and services only. So globalization used to make shape the national policy agendas. Some scholars have suggested that globalization created the major role of state and administration, and also the term globalization means there is no territorial boundary, and it claimed that the entire realm of the world is one. Okay, now we can understood that due to the technology, information and the technology era, we have understood that there is no territorial boundary, and we are that entire realm of the world are one. It denotes the integration and convergence of the world power, economic system, and administrative systems and all. The economists used to say that globalization is the advanced steps towards the fully integrated into the world market. Okay, and the political scientists, that as I already mentioned, that globalization used to have a various interpretation from the social, political, and economic, and it has a different value. As per economists, globalization is a advanced steps to integrate the world market, and the political scientists consider that globalizationism is a new world order with supranational and global governing bodies, like for example WTO, World Trade Organization, United Nations, and World Bank, and many treaty used to be there. They used to control the world order, and it created that it made the global governing bodies, and the business scholar, they view it as a unlimited opportunity for the borderless world. Okay, earlier that if you look into that, earlier we used to have a work is that 9 to 5. Now we are working for a shift basis. Now we are working for a UK time. Now we are working for a US time. So the world order and the business time and the business is which changed. That business scholar has been expressed overwhelmed towards about the unlimited opportunity in a borderless world. And others used to see globalization as a phenomenon driven by some people used to say that it is a private sector companies, and it is not about the government and all. Generally, globalization is seen as the process of reducing the barriers between the countries and encouraging the it kind of a economic, social, political, and
and political interaction, and it used to increase the ability of people everywhere to share knowledge and the living standards. So globalization means it's a global market. In brief, you can say that globalization is the multi-dimensional process. It has a negative also as well as positive, that positive consequences also there. Now we are going to see that how the globalization has made an impact towards the administration, towards the policy and all. The globalization is bring about an unprecedented expansion of trade, finance and investment, accompanied by unparalleled technological inventions and higher level of consumer demands and expectations. Like if you want to know about the exact, if you go through the movies which is replicated in 1990s to 2000, that mostly it focused upon the unemployment and poverty and all. Now you just look into that. Okay, it has that globalization has brought about the expansion of trade, finance and the investment, and you can see that various product also there. And if you look into the car or automobile industry, or if you look into the medical, or if you look into the information technology, everywhere we have bring about the lot of innovations are there. So the impact of globalization on the economy is mixed with the benefits due to the competition among the economic crisis. And another thing is that it has weakened the state apparatus, and it has created the propagation of market-oriented values and disturbing the concentration of the wealth, leading to increasing levels of poverty, inequality, social crisis, with significant repercussions on the development process and all. So this was there. Like for example, it may reduce the levels of poverty due to the unemployment, due to employment rate, but what happened is that it kind of created the inequality and the social crisis also there. So globalization is in a result, it brought transition from centrally planned to market structure and their integration with the global economy in the world over. So this has some kind of a repercussion for the administrative framework also and the state machinery also. When you are moving into the centrally planned country into the market structure, so what used to happen is that it used to affect the administrative framework also, and that functioning of state machinery also, it used to affect the state measure structure and functions of the government. Okay, now you can see that earlier for each and every certificate we used to go to the government office. Now what happened due to the ICT? Okay, in ICT revolution, we are applying and getting everything from the at home only. So this has been changed the working structure, organization structure, the functioning of the organization also. Instead of the world order is telling the state that instead of providing the services, you just facilitate. Just instead of supplying the milk, you just facilitate the organization. Those who are supplying the milk are basic necessary. So that's why now you can see that they have introduced the many components like a public-private partnership and that private sector involvement in the delivery services also. And these has created a kind of acquiring a new skills and capability, and it has changed the mindset of the personnel to adjust to the new environment. And also what happened, that nature of the public administration and the process of public administration has been severely affected by the changing perception of the state and managerial orientation in government and market driven approach to development, and increasing advocacy of the roles of government, market and civil society. So in the globalization area, what happened is that there was a kind of interaction between the government, market and the civil society. Now you can see that in our
in our administrative structure also they have introduced the the direct appointment and lateral entry, so many things has been introduced. So and they have introduced the performance appraisal. The performance appraisal has been introduced in the 6th pay commission. That is kind of a that it's a kind of a market based technique. Okay, so in that way it has brought about a new changes into the state of public administration, and how these new challenges has been, and also there kind of a new challenges has been emerged due to the impact of the globalization. That is that new skills, negotiation skill among the sovereign states, and change the role of bureaucracy, like for example managing to facilitating economic activity. Earlier the government used to manage the activity, the government or bureaucrats or you can say anything, they used to management everything. Now they have to facilitate the economic activity, and the organizational and managerial culture which stresses performance to result oriented management. Earlier people used to say once you have joined the government there is no need to worry about that, but now due to globalization that managerial and culture with they have forced that managerial culture has been focuses upon or stresses upon the performance and the result oriented government, and focus mostly we have to give managerial leadership and expertise. And due to the, as I already mentioned about the emergence of the e-government and the need for a comparative perspective, so these things that these things what happened like it has created a kind of a changeover into the traditional public administration into the new kind of a public administration system and all. So, and towards this, and how these kind of a global events has been changing the national policy agenda. So far we have discussing about how the global order or the privatization and liberalization has been changing the national policy agenda. Earlier the policy agenda used to be there based upon the demands of the public. Now that market forces has been entered to the public towards in the state-owned institution. So the global events also changing the national policy agenda. Like for example in developing countries are particularly mostly they are vulnerable to global events, and most of the time the actions that depend heavily on the international community for financial and technical assistance. Okay, the developing countries are mostly they used to wait for the subsidies, or you can say that the aid loan from the Asian Development Bank, World Bank and WTO. Okay, many international communities are there, they are particularly vulnerable to the global events and the actions. Like even you can take an example of COVID-19. Okay, in that what happened that COVID has been affected the change the global events, they change the global orders also, and it makes the boundaryless. Okay, it makes the that language of the people is different, but other than that everything is then changed only. So the national policies are of the developing countries are mostly interlocked with the global issues, because the poor countries generally they have a fragile policies, and they used to have a weak system of accountability, and they used to have a few autonomic institutions, and they used to have a little bit considerable influence. And also, so the boundaries of the political system are no longer imperable to the outside pressures and influences, and public policy now takes place as the world system as well as national political system also. The world has become a single social system, and the result of growing ties of interdependence also there. The point is here that there is a new kind of interplay between the transnational companies and national and the world companies and all. With the globalization, there is a greater scope of nation state and the other countries. A nation state has come into the exercise less control on policy agenda in the
later period of the 20th century. Most of the entire time, the private sector or market forces are changing the national policy agenda. From the national policy agenda, this means that policy agenda may be global and policy making and implementation remain national. So there is a new kind of interplay between the companies and the nation and state also. And another thing is that global politics has added a role to play in the determination of national issues, especially of a developing nations. Like global issues interact with the national issues. Like for example, how the Ukraine crisis has been affected the world order, and the same way. And if any war happened in any particular country, how it affected also. So the global issues also interacting, or you can say is affecting the national issues in a local level also. So the globalization post that these layers are becoming ever more interactive and permeable, that a new policy is emerging and that globalization, how it implicates the national policy agenda. The world is experiencing a high degree of globalization and feeling its impact. Globalization has transformed the policy as well as the society also. Like for example, you can see that we have a very established road, well connectivity with the road. We have a, urbanized. We are getting everything. Earlier we used to depend upon the foreign country. Now we are getting everything from in the country in a small places also. So the globalization, not only it has changed the global policy, it has changed the society also. In fact, as I discussed earlier, globalization has a consequences in both the way, in the positive also and a negative also for the society governance system. These impacts are not equally distributed to the all nation, but it is a, like for example, developed nations are the prime beneficiaries, and the developing countries or developing nations are the marginal recipients of the benefits also. And second, there is a shift in the approach of the functions of the state. There is a shift in the sense, like for example, introducing the market-driven and the corporate state world, like that service delivery mostly now. Most of the service delivery are issued by the private sector only, and market-driven state is coercive and it works towards the interest of the corporate capitalism. And the third one is that globalization is a threat to the state sovereignty, democracy and individual freedom of most developing countries. This is one of the serious, that it is a state sovereignty and is to affect the democracy and individual freedom of most developing countries. And like for example, supranational organizations such as like World Bank, International Monetary Fund, World Trade Organization, as well as the host of the other various international organizations, they used to dominate by the superpowers like United States, European Union, and other trans-world corporations. They used to forcing the member states to adopt globalization-led decisions that may against the national interest. And also earlier you can say that if you get the loan, they are against the subsidies also. And so most of the time these kind of institutions used to make some kind of restriction towards the developing nations also. So in the global age, identity become a fundamental issue both on individual and the social level severely, and many of these kind of superior power, it creates the poverty also and unemployment. And the fourth, it also that globalization also changing, it has created a biggest threat to the ecological system. Most developing and developed nations pay a little, like for example, developed nation, their objective towards the people is different. They have improved, they have achieved the eradication of poverty, industrial development, and have a minimum improved the status in the social and the development sector. But if you look into the developing countries, their area of working is to be different. They have to improve the education, social sector, they have to improve the industrial development, they have to eradicate the poverty. So what happened is they have given a less importance to protect the environment. So the rate of global warming has been higher in the recent decades.
You may be think that what happened, that how this economic policy has been impact the global warming and all. So as I already mentioned that this kind of globalization is, that it affecting social, political and economic and environmental concerns also. So it has turned increased average temperature of the oceans and decline in glaciers and snow cover, and there has been a 70% of increase in greenhouse gases such as carbon dioxide, methane and nitrous oxide in the past 50 years. So the global increase in the carbon dioxide concentration due to the fossil fuels and land use change. And another fifth one is that supranational and trans world corporation they are the lords of poverty. Okay, globalization causes more unemployment through technological innovations and drains governing system with the tax subsidies and the tax expenditure, and demands the massive expenditure on security and military functions for policing and social control. So the result is increasing crisis in government and public administration. It is, that it increasing day by day towards that only. So towards the end, we have come, in this session we have discussed about the importance of public policy and how the nature of the state, how the nature of the state has been changing the dynamics of public policy, and how the public policy is changing towards the global order, and the importance and objectives of the liberalization, privatization and globalization. So towards the end, we can understand that developing democratic countries' policy agendas are mostly driven by the policy by the global forces. Like for example, problems mostly arise in the economic and social conditions only. Mostly it is shaped by the political strategy which is advanced by the global forces, and many developing countries policy agendas, as I already mentioned, that global forces, many time what happen is that the policies are economic or social conditions, if you want to improve, that it mostly it determined by the global forces only. So that's what we used to say, the global village, like globalization is the global village. Globalization used to play it affect the developing democratic world and all. So thank you for listening. Thanks a lot.